गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वैगई डैम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड फ्लड वार्निंग मिली है 5 सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स को, तमिलनाडु के, क्योंकि वाटर लेवल जो है वैगई डैम का वो 68.5 पर पहुंच चुका है। जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है वो 71 फीट है। ठीक है। तो वैगई डैम जो है वो वैगई रिवर पर बनाया गया है, अंदीपत्ती के पास, जो कि थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में पड़ता है। 1959 में इस डैम को बनाया गया था और इसको कहा जाता है कि ये उस रीजन की लाइफलाइन है। और इसकी लगभग 111 फीट की हाइट है। 71 फीट का ये पानी जो है ये स्टोर कर सकता है। और ये प्राइमरीली बनाया गया था कि मदुराई डिस्ट्रिक्ट जो है उसको इरिगेशन फैसिलिटीज़ देना है, और दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट जो है मदुराई के साथ, उसको भी जो है इरिगेशन फैसिलिटी देना है। और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ मदुराई और अंदीपत्ती को देने के लिए ये बनाया गया था। और यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन भी बनाया है, एक स्मॉल गार्डन भी बनाया है जिसको लिटिल वृंदावन कहा जाता है। ठीक है। तो वैगई रिवर जो है ये तमिलनाडु स्टेट में पड़ती है, और वरुशनाथ हिल्स जो है वेस्टर्न घाट के वहाँ से ओरिजिनेट होती है। पांड्या नाडु रीजन ऑफ तमिलनाडु से होते हुए ये मेजर रिवर जो है ये मदुराई तक आती है। और ऑफ कोर्स जो कि कैपिटल ऑफ एंशंट और प्रॉस्परस पांड्या किंगडम थी तमिलनाडु में। और इसको जो है संगम लिटरेचर में भी एक मेंशन मिलता है। वैगई जो है ये पेरियार डैम जो है केरला का, वहाँ से मेजर फीड लेती है, और फाइनली जाकर पार्क स्ट्रेट जो है रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर जाकर ख़त्म होती है। ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट्स जो है 5 डिस्ट्रिक्ट्स की तमिलनाडु के, थेनी, मदुराई, रामनाथपुरम, शिवगंगाई और दिंडीगुल रीजन को देने के लिए इसको बना जो है ये रादर ये ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ देती है। तो इसको जो है इरिगेशन पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि 2 लाख हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड को इरिगेशन पर्पसेस के लिए वाटर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रशिया ने फॉर्मली ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप से विड्रॉ कर लिया है, और उसके तुरंत बाद नेटो ने भी अनाउंस किया है कि वो भी इस ट्रीटी को जो है वो फॉर्मली सस्पेंड करेंगे। तो ये ट्रीटी जो है फाइनल ईयर्स ऑफ कोल्ड वॉर का टाइम पर जो है नेगोशिएट की गई थी, और जैसे ही जब फॉल ऑफ बर्लिन वॉल हुआ इसको उस टाइम पर साइन किया गया। और ये बेसिकली ट्रीटी क्या कहती है, ये कहती है कि जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो आपके नेटो और वॉर्सो, उस टाइम पर वॉर्सो पैक्ट की कंट्रीज होती थी, उनके बीच में जो है मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर लिमिट लगाती है। पर्पज़ इस ट्रीटी का ये था कि कोल्ड वॉर राइवल्स जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास में जो है वो मिलिट्री बिल्डअप ना करें, ताकि अगर ऐसी वॉर की सिचुएशन हो तो स्विफ्ट असॉल्ट ना हो पाए। उस समय नेटो और वॉर्सो पैक्ट की कंट्रीज़ जो हैं इकट्ठे हुई 1990 में, और इस एग्रीमेंट को साइन किया गया। ठीक है। अब इस एग्रीमेंट में जो है सीएफई की स्टेट पार्टीज़ जो हैं उन्होंने अपने 50,000 वेपन सिस्टम्स को भी डिस्ट्रॉय किया जो उस समय आसपास में लगे हुए थे। इस ट्रीटी के स्कोप को बढ़ाया गया, ट्रूप नंबर्स को भी जो है इसमें वाइडन किया गया। ठीक है। फिर इस्तांबुल समिट जो हुई 1999 की, उसमें एक अपडेटेड ट्रीटी को भी जो है वो अडॉप्ट किया गया। ठीक है। जिसमें कि लिमिटेशन लगाई गई कन्वेंशनल वेपन सिस्टम्स पे, और कहा गया कि टेरिटोरियल बॉर्डर्स पर इंडिविजुअल स्टेट्स के, पहले तो सिर्फ वॉर्सो पैक्ट और नाटो कंट्रीज़ के बीच में ये पैक्ट होता था, फिर जो अब इंडिविजुअल स्टेट्स के लेवल पर भी जो है टेरिटोरियल बॉर्डर्स तक जो है ये कन्वेंशनल वेपन सिस्टम्स जो है वो नहीं आएंगे, ये ट्रीटी में साइन किया गया। तो ऐसा पहली बार नहीं है रशिया इस ट्रीटी में पार्टिसिपेशन को सस्पेंड कर रहा है, 2007 में भी ऐसा हो चुका है। ठीक है। तो वॉर्सो पैक्ट क्या था, तो नेटो तो आपको पता ही है। तो उस समय जो है वॉर्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वॉर्सो पैक्ट एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस था जो 1955 में साइन किया गया था सोवियत यूनियन और सेवरल ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में। तो एज अ काउंटर बैलेंस टू नेटो इसको बनाया गया था सोवियत यूनियन द्वारा। उस समय इसमें सोवियत यूनियन, अल्बेनिया, पोलैंड, सेकोस्लोवाकिया चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बल्गेरिया, रोमानिया और जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसके ओरिजिनल सिग्नेटरीज थे। ओरिजिनली जो मेंबर्स थे वॉर्सो पैक्ट के, उन्होंने जो है एक दूसरे को प्लेज किया था कि अगर उनमें से किसी एक पर भी अटैक होता है तो वो एक दूसरे को डिफेंड करेंगे, और एक दूसरे की इंटरनल अफेयर्स में
नॉन इंटरफेरेंस रखेंगे, ठीक है, और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग भी रहेगी। ऑफ कोर्स इसको ऑफिशियली डिसबैंड कर दिया गया जैसे ही सोवियत यूनियन जो है 1991 में डिसइंटीग्रेट हुआ। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला है कि सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट में एडमिसिबिलिटी तभी मानी जाएगी जब जो फैक्ट डिस्कवर किया गया है उसका कुछ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस या जो है वो इंफॉर्मेशन रिसीव जो कस्टडी में की गई है पर्सन से वो उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हो, ठीक है। तो सेक्शन 27 जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है एविडेंस एक्ट में, कि जो कन्फेशंस किए जाते हैं पुलिस कस्टडी में, ठीक है। तो सेक्शन 25 और सेक्शन 26 तो क्या कहता है कि आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, मतलब आपको पुलिस जो है अथॉरिटी आपसे कन्फेशन नहीं करवा सकती पुलिस कस्टडी में, ठीक है, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट या फिर जो है कोर्ट ऑफ लॉ के परमिशन के बिना। तो लेकिन सेक्शन 27 एक एक्सेप्शन ऐड करता है, वो कहता है कि कौन से कन्फेशंस जो कि पुलिस कस्टडी में लिए जाएंगे वो कौन से वैलिड होंगे उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो वो ये कहता है सेक्शन 27 कि अगर कोई कन्फेशन ऐसा जो है पुलिस कस्टडी में लिया जाता है दिया जाता है रादर जो है पर्सन द्वारा, जिसकी वजह से आगे इन्वेस्टिगेशन में कोई फैक्ट रिवील होता है जो कि कोर्ट में एडमिसिबल है, तो उस कन्फेशन को जो है वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो इसी कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि जो फैक्ट डिस्कवर किया जाएगा उस कन्फेशंस की वजह से वो डायरेक्टली उस कन्फेशन से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब उस जो है पर्सन से इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है उससे डायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए, अदरवाइज जो है वो सेक्शन 27 की जो प्रोविजंस वो वैलिड नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है प्रोजेक्ट डॉल्फिन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है मरीन इकोलॉजी को स्ट्रेंथन करने का एक प्रोजेक्ट है, ओवरऑल हेल्थ ऑफ मरीन इन्वायरमेंट को जो है स्ट्रेंथन करेगा पेट्रोलिंग और सर्वेलेंस के थ्रू, ठीक है। लगभग 8 करोड़ से के आसपास जो है वो 2023 और 2024 में इसका बजट रखा गया है, जिसमें से 60% अमाउंट जो है यूनियन गवर्नमेंट देगी, 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो ऑफ तमिलनाडु इसको बेयर करेगा। तो इससे जो है डॉल्फिन स्पीशीज़ जो है वो उनकी पॉपुलेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प रहेगा। लगभग 9 स्पीशीज़ मरीन डॉल्फिन्स की कोस्टल वाटर्स ऑफ तमिलनाडु में मिलती हैं। मेजर हैबिटेट्स ऑफ डॉल्फिन्स जो है आपको गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलते हैं। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोग्राम है क्या? एक ऑनगोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ को सपोर्ट देती है, वाइल्ड लाइफ जो है आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज़ उनके प्रोटेक्शन के लिए सपोर्ट देती है, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और हैबिटेट्स की भी रिकवरी प्रोग्राम्स में जो है वो सपोर्ट देती है। तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? तो ये 3 डिस्टिंक्ट कोस्टल इकोसिस्टम्स को लेकर बना है, कोरल रीफ्स, सी ग्रास बेड और मैंग्रोव्स, और इसको वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन्स कहा जा रहा है मरीन बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से। ये कई तरह के ग्लोबली इंपॉर्टेंट और हाईली थ्रेटन्ड स्पीशीज़ जैसे कि डुगोंग, वेल शार्क, सी हॉर्सेस, बालानोग्लोसस, ग्रीन सी टर्टल, हॉक्सबिल टर्टल, ये इन सब को जो है होम का ही होम है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कृषि 24/7। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर उन्होंने कृषि 24/7 बनाया है, जो कि एक फर्स्ट एवर AI पावर्ड सोल्यूशन है ऑटोमेटेड एग्रीकल्चर न्यूज़ को मॉनिटर करने के लिए और एनालाइज करने के लिए, जिसमें कि गूगल से सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, वो इस टूल का इस्तेमाल करके जितने भी मेजर न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे, और उसमें से इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी जैसे हेडलाइन, क्रॉप नेम, इवेंट टाइप, डेट, लोकेशन, सिवेरिटी, समरी या सोर्स लिंक, उस ऐसी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। इससे होगा क्या कि एग्रीकल्चर न्यूज़ पर जो है या जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं उसके ऊपर जो है वो एक नज़र बनाकर रख सकेगी मिनिस्ट्री, ताकि टाइमली डिसीजन मेकिंग की जा सके, ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्लूचोवस्की वॉल्केनो। तो ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो क्लूचोवस्कोय वॉल्केनो जो है वो इरप्ट हुआ है रशिया के कामचटका पेनिनसुला में। तो ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉल्केनोज है रशिया का, वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्केनोज भी है वर्ल्ड का। ये एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है और ये लगभग 50 बार इरप्ट हो चुका है साल 1700 के बाद से। कामचटका पेनिनसुला फार ईस्टर्न रशिया में पड़ता है, आपको पता ही है। और ये सी ऑफ ओखोत्स्क जो वेस्ट इसके वेस्ट में है, और पैसिफिक ओशन और बेरिंग सी इसके ईस्ट में है। ठीक है, लगभग 30 एक्टिव वॉल्केनोज इस रीजन में पड़ते हैं और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पेनिनसुलाज इन द वर्ल्ड है। क्लाइमेट यहाँ पर सिवियर रहता है, कोल्ड स्नोई विंटर्स, वेट कूल समर्स, और जो है फास्ट बेल्ट ऑफ अर्थ यहाँ पर जो है इसकी रिंग ऑफ फायर रीजन में ही पड़ती है, जो कि जहाँ पर फ्रीक्वेंट वॉल्केनिक इरप्शंस और फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते हैं। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is Vagai Dam. This topic is important for your environment and your economy section. So a second flood warning for 5 southern districts of Tamil Nadu have been issued as the water levels in Vagai Dam has touched 68.50 feet, and the maximum permissible level of course is 71 feet. So this Vagai Dam is constructed across the Vagai River near Andipati in the Theni district of Tamil Nadu, and it was built in 1959, and it is often referred to as the lifeline of this region. So it has a height of about 111 feet and it can store 71 feet of water. It was primarily built to provide water for irrigation in the Madurai district and Dindikul district of Tamil Nadu, as well as the drinking water facilities for Madurai and Andipati. Okay, so near this dam, government of Tamil Nadu has also constructed an agriculture research station for researching the growing variety of crops. There is also a small garden here called the Little Brindaban, which is located in close proximity to this dam. So what is Vagai River? It is a river in Tamil Nadu state and it rises in the Varushnad hills of the Western Ghats, and it travels through the Pandya Nadu region of Tamil Nadu, and it is the major river in the fabled city of Madurai. This river also finds a mention in Sangam literature, and this river gets major feed from the Periyar Dam in Kerala, and it finally gets emptied into the Park Strait. This river fulfills the drinking water requirements of 5 districts of Tamil Nadu: Theni, Madurai, Ramananthapuram, Shivagangai, and Dindigul. Okay, it also provides irrigation facilities to 2 lakh hectares of agricultural land in the state. So the next topic is Treaty of Conventional Armed Forces in Europe. This topic is important for your international relations. So Russia has formally withdrawn from the Treaty of Conventional Armed Forces in Europe recently, and just after that NATO has also announced that they will also be formally suspending this Cold War era security treaty. So most of the NATO allies have signed this treaty of CFE in Europe in 1990. So this treaty was negotiated during the final years of Cold War, and it was signed a year after the fall of Berlin Wall. This treaty places limits on the deployment of military equipment to maintain military balance between NATO and the then Warsaw Pact countries. So the purpose of this treaty was to stop the Cold War rivals from building up forces near to to each other's borders, so that it cannot be used in a swift assault in case of a conflict. So NATO and Warsaw Pact countries came together in Paris in 1990 to sign this agreement. Uh, After that, the CFE state parties also destroyed their more than 50,000 weapon systems, and they also expanded the scope of this treaty to cover troop numbers. In 1999, at Istanbul summit, this treaty was updated and modified, and now, after 1999, a major limitation was put up on conventional weapon systems, and now the treaty was signed not between two blocks, but uh, it was made applicable to the territorial borders of individual states. Okay, Russia is not the first time. Russia is not suspending its participation in this treaty for the first time. It has done so in 2007 and 2015 also. Okay, so what is Warsaw Pact? So it's a political and military alliance which was established in 1955 between Soviet Union and several Eastern European countries, and it was formed as an alliance which was a counterbalance to the NATO,
And the countries which were original signatories to Warsaw Treaty Organization were Soviet Union, Albania, Poland, Czechoslovakia, Hungary, Bulgaria, Romania, and the German Democratic Republic. Okay, at that time it was also called the East Germany. So uh, the Warsaw Pact members pledged to defend each other in case any of them get under attack, similar to the NATO countries. Okay, they also emphasized non-interference in the internal affairs of its members, and also organized themselves around collective decision making. But with the dismemberment or disintegration of Soviet Union, Warsaw Pact was also disbanded in July 2000. I'm sorry, 1991. So the next topic is Section 27 of the Evidence Act. This topic is important for your governance section. So Supreme Court has recently held that for admissibility under Section 27 of the Evidence Act, the fact which has been discovered must be a direct consequence of the information received from a person in custody. Okay, so you know that under our constitution, you have right against self-incrimination. Okay, or you can say that you have a protection against self-incrimination. So Section 25 and Section 26 of the Evidence Act says that a person in police custody, the person's confessions cannot be made admissible in the court of law. But there is an exception. Section 27 is an exception, and it says that if these confessions can lead to certain discovery of facts in the investigation, then of course these confessions would be made admissible. So for that, Supreme Court has said that we would only be making these confessions admissible if the facts which have been revealed by the confessions of the person who is in custody are a direct consequence of the confession. Okay, so any confession which has been made up by a person while in police custody, if it leads to revelation of facts, will be considered admissible in the court of law. Okay, so so the basic idea embedded in Section 27 of Evidence Act is the doctrine of confirmation by subsequent events. Okay, so this doctrine is founded on the principle that every part of the statement made at the instance of the accused in a police custody should necessarily be confirmed by subsequent events of discovery. Okay, so only if whatever confessions that you are making, only if it leads to discovery of certain facts because of your confession, only then uh, this confession would be made admissible in the court of law. Okay, so the next topic is Project Dolphin. This topic is important for your environment section. So recently Tamil Nadu government has issued an order to implement Project Dolphin under the Integrated Development of Wildlife Habitat Program of the Government of India. So Project Dolphin will strengthen the marine ecology and overall health of the marine environment. This project would include strengthening patrolling and surveillance, improving habitat through restoration of coastal ecosystems, removing ghost nets, and also encouraging the involvement of local communities. So it will be implemented at a cost of about 8 crore rupees during 2023 and 2024, and 60% of the amount will be given by the union government. The state will bear the remaining amount. So this will be helpful in improving the population of dolphin species. You know that about more than 9 species of marine dolphins are found in this coastal waters of Tamil Nadu, and 3 major habitats of dolphins are found in the Gulf of Mannar biosphere reserves. So what is integrated uh, development of uh, development of wildlife habitat program? So it's an ongoing centrally sponsored scheme that has been made operational by adding more components and activities to the erstwhile centrally sponsored scheme, uh, which was meant for the same purpose. So the components of this scheme involve support to protected areas, protection of wildlife outside protected areas, and recovery programs for saving critically endangered species and habitats. Okay, so what is Gulf of Mannar Biosphere Reserve? So it is endowed with 3 distinct coastal ecosystems: coral reefs, seagrass bed, and mangroves, and it is considered one of the world's richest regions from a marine biodiversity perspective. Okay, so it is also home to several globally important and highly threatened species like the dugong, whale shark, seahorses, balanoglossus, green sea turtle, hawksbill turtle, etc. Okay,
So the next topic is Krishi 24/7. This topic is important for your governance section. So recently, Union Agriculture Ministry, in collaboration with Vadhvani Institute for Artificial Intelligence, has developed Krishi 24/7. So this is the first ever AI powered solution for automated agricultural news, and uh, this has been made with the support from Google. Okay, so this tool basically is meant to scan news items from in multiple languages, and that then it would be translated into English. This would extract essential information from news articles like headlines, crop name, event type, date, location, severity, summary, and source link. And this would basically also help the Department of Agriculture and Farmers Welfare to provide information or timely information regarding the agriculture news items, so that they can make timely decisions. Okay, so the next topic is Kluchovoskoy volcano. This topic is important for your environment section. So recently, Kluchovoskoy volcano has erupted on Russia's Kamchatka Peninsula, and it is one of the most famous volcanoes in Russia. It is one of the highest active volcanoes in the world. It is also a stratovolcano, and it has erupted more than 50 times since 1700. Okay, so what is Kamchatka Peninsula? It lies in far eastern Russia between the Sea of Okhotsk on the west and Pacific Ocean Bering Sea on the east. It is one of the world's most concentrated areas of geothermal activity with about 30 active volcanoes here. It is also one of the largest peninsulas in the world. If we look at the climate here, then it has severe climate, cold and snowy winters with wet and cool summers. It is also part of the ring of fire which circles the Pacific Ocean, and we all know that it is prone to volcanic eruptions and frequent earthquakes. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.